Good afternoon to you all. Good afternoon, sir. I was supposed to speak on a different topic today. It was to be how we learn to be mediocre. Unfortunately, I didn't have all my pictures, and I thought a long lecture is not without adequate images. It's not. People tend to get bored. So I decided to go ahead with something else. This is called, and I do request that you pardon me for the change, but this one is called Jal Thal Mal, which is the title of a book that came out 2 years ago. And it has to do with sanitation, supposedly, but it gets into several topics, as you will see during the length of the presentation. As Mr. Vice Chancellor just told you, I'm a journalist, but there are many kinds of journalists, just like there are many kinds of academics. And my journalism has mostly been about villages and farmers. So my story actually begins with one such incident. I had been assigned to write about the farmers of Ladakh in the October of 2003. That's how far back the story goes. 2003, yes, and I worked for a magazine. I chose to work for a magazine primarily because when you're working for a magazine or a monthly, at least a weekly, you have a few days to research what you write. Otherwise, journalists are always in a great hurry. They need to just figure something out quickly and go and report it. Whereas if you work for a magazine, you have some time to research what you have to say. And for this research, I landed up in Ladakh. Now, for those of you who have been to Ladakh, you'll know that it's a completely different landscape to the rest of the country. Ladakh is part of the Tibetan plateau, beyond the Himalaya. The average elevation is 3.5 kilometers above mean sea level. And it is extremely difficult to breathe even. It's not that there isn't enough oxygen, but it's just that there is not enough atmospheric pressure to get that oxygen to dissolve into your lungs. So you have to actually, just walking around is heavy work. And you can imagine people have lived there in Ladakh for centuries. And they were not isolated people. They were not idiots who were living there in isolation. They were actually trading with Europe on the one hand and China with the other, because Ladakh was part of the Silk Route. But they still chose to live in this difficult terrain. And as I roamed around, I met farmers. I found that very few Ladakhi villages have farming now, because young people, the men all recruit, they get recruited by the army, not the army actually, the Indo-Tibet Bottom Force. And the young girls all go to the city. So there are these villages which have no young people there. And the farmers and the fields just lie fallow. So after a lot of effort, I managed to find myself a farmer called Padma Vangyal, who was still cultivating the field of his ancestors in a beautiful part on the banks of the river Indus, Sindhu. So I asked Padma if I could come with him and spend 2 days on his farm. We went to his farm, we spoke till late at night, and then in the morning, after I woke up, I asked him, where could I go? Where was the toilet? So he asked me to get out of the door. The picture that you see here, this is the Ladakhi version of an attached toilet. This is in Leh city, but in typical Ladakhi villages, the toilet is actually detached from the main structure. So as I got out, I saw this. Then he realized I'm new there.
So as I was going towards that room, he said, take the stairs and go to the first floor. I went to the first floor, and right in the middle of that room, I saw a hole. Now it doesn't take an elaborate lesson in hygiene to know what to do here. So I just squatted above the hole. I relieved myself, put a little bit of dirt on top of that, and there was toilet paper. I got out, and then I went around the back of the lower level. When I opened it, I found it was full of feces. I got back and I asked Padma, what do you do with this? And Padma said, I put it in the fields. I said, who does it? He said, I do it. How? I asked. He said, with my hands. I take a spade and I put it in a cart and I take it there. I said, why? He said, ours is a desert. It's a cold desert. We don't have any biomass in our soil. So it doesn't hold any water. If you don't have organic compost, you can't grow any crops here. So I said, isn't this, I asked him in Hindi, घिन नहीं आती तुम्हें? He said, घिन क्यों आएगी? इसके बिना तो खेती नहीं हो सकती. I kept on asking him because as journalists we are told we must ask questions because that is the way to learn. But after a point, he got a little irritated with me, with my questioning him on, did he feel any disgust? Did he feel revulsion? Because I went on telling him that people who do this, they are relegated to like an untouchable caste, and it's supposed to be dirty and unclean and all of that. So he just stopped a while and said, हाँ मुझे घिन आती है. मुझे घिन आती है जब मैं शहर जाता हूँ और कोमोड के ऊपर बैठ के हगता हूँ ताज़े पानी में और नीचे से छपाक छपाक की आवाज़ आती है. He said it just mortified him that good clean water was being wasted like this, and that valuable fertilizer was being wasted along with the clean water. After that, I had no questions to ask him. I just had the two words resonating in my head, chapak chapak. And that made me reassess sanitation. And what you will see is a result of those two words from Padma Vangyal. Because after a few years, I managed to travel to all the way across 2,500 kilometers, Tamil Nadu, and a district called Tiruchirappalli, Trichy it's called in the short form. And there I came across a very modern kind of toilet. The old Ladakhi toilet is called Chagra. Now that combines, because see there's no dearth of land in Ladakh. Ladakh has lots of land. But in Tamil Nadu, land is at a premium. So I saw this toilet called the EcoSan, which essentially separates urine from feces. How does it come about? Well, it's a story of a British marine engineer who stays in Kerala. But before that, it's the story of an architect from Sweden. His name is Uno Winblad. Uno Winblad is widely known as one of the pioneers of toilet designs in the world. But Uno, in the early 70s, Uno had just finished his course in Sweden, and he took an assignment in Ethiopia, a town planning assignment. And there he realized that if he was to make a modern kind of sewerage system in a land which had such little water, it just did not make any sense at all. So he designed a toilet in which you could separate the feces from urine. That's exactly what your body does. Because you see, you eat everything from the same hole. But the nitrogen comes out of a different hole, that's through our urine, through the kidneys. And the carbon comes out of the digestive tract as feces. The body separates phosphorus and nitrogen from carbon. And Uno Winblad designed this system
to maintain that separation. Because if you separate the two, and if you can keep the feces dry, they break down in a matter of weeks, depending on the temperature, and they turn to mud. So this system worked quite well. It just required some degree of training, because our body is designed in such a way that when we, both on a Desi style squatting toilet or a Western style commode, our body is designed in such a way that the urine goes in front, whereas the feces fall down. So once you separate the two, and if you can keep the feces dry, there's your sanitation. You've separated, you've contained feces, you've stopped the infections from spreading further. But this, remember, is for an area where people are used to wiping their behinds after relieving themselves. The world has two kinds of people. You know, like they say in those chai ki dukaan Hindi storytelling sessions. दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो मलत्याग करने के बाद अपना पछवाड़ा धोते हैं और जो पोंछते हैं. We belong to the washers, not the wipers. And Uno Winblad had a friend called Paul Calvert. Paul Calvert is a marine engineer who spends each winter in Kerala. Now the village where he stayed was a village of fishermen, where they had toilets but they didn't use them, because the people who built toilets there made pits underneath, and this area had very high water tables, which meant the toilet pit was full of water. So when you sat down to shit, you again heard chapak chapak, and then the feces kept floating on the top of that water. It wasn't a good experience. So people used to defecate in the open. Paul Calvert decided to take Uno Winblad's design, and he added a basin at the back, as you can see. So how many people here, let's take a vote, how many people here have actually defecated in the open? I have. I've defecated on glaciers, I've defecated in forests, I've defecated in all kinds of places. So I hope there are people here who've defecated in the open. Nobody? See, it takes a while. Anything to do with defecation, people hesitate. Very few people. Now those who raise their hands, and those who have actually squatted in the open but were too shy to raise their hands, they know that when you defecate in the open and you try to wash yourself, if you don't move ahead, you soil your hands. So anybody who goes to defecate in the open knows this basic lesson. Move ahead before you wash yourself. What Paul Calvert did was he designed a commode in which instead of moving ahead, you step back. And the requirement is very simple. You have to ensure that your feces are dry. You don't mix it with water or urine. And it's very easy to have pipes going from the urine pipe, can go separately from the washing pipe. And once you separate, you don't need to, this toilet does not send any kind of pollutants into the environment. It's the ideal toilet design for our world. Because when you do this, you don't just flush it all down into a pit or down to a river. Once it breaks down, you can take it and put it in the fields. It's compost. As for urine, urine is pretty much aseptic. It has very few microbes in it, very few pathogens, and urine can be diluted straight away 5:1 with water and applied to the fields, and it's valuable. It's valuable urea for one, also phosphate. I've had fruits from trees that were irrigated with urine, and I can tell you, they're tastier and better than any other kind of fertilizer that you can find. So this design that Paul Calvert had created for India is on your left. That design was mentioned by a very sensible IAS officer called Shanti Sheela Nair to a man called Subburaman.
Subburaman is a great toilet man. Subburaman has built, I think, more than 30,000 toilets. And he's built hundreds of eco-sand toilets in places where the water table is too high, where it's not possible to create a pit underneath. And Subburaman took that design and he made an adaptation. Instead of having two parallel commodes, because see, once one chamber of feces gets filled up, you cannot change it. You have to leave it. You have to leave the feces to get dried out and break down into soil. Because till it breaks down and dries up, it's full of pathogens. So if you, instead of making two compost pits, what Subburaman did was he made one commode with the same urine chamber. So in one case, you sit facing this way. When that chamber underneath fills up, you close it and you move to the other side. The urine chamber remains common. Now, you can spend time with Subburaman, and he's one of the most educated people on toilet design that I've come across. And if you ever want jokes on civil engineers and the general incompetence of civil engineers in India, Subburaman is a great man. You just walk with him and he'll describe to you how house designs are flawed, how educated engineers don't know the basics of sanitation, how they don't even know the basics of construction. It was quite a revelation for me to travel with Subburaman. But you know, there are people all across the country who are looking for solutions like this, who have been looking for solutions like this for a long time. Subburaman has been doing this for like 30 years. There are other people who are finding out different ways, because the important thing to remember is the Ladakhi Chagra toilet and the modern eco-sand toilet, the idea is the same. What comes out of land should go back to land instead of being flushed down with water. But what happens, is it possible to treat excreta when it's flushed down with water? I'll give you an example of what is happening, what started happening in Chennai and Bangalore and is now happening across towns in our country. We are not, because sanitation is so poorly understood, most of us do not know that in all our cities, more than half the toilets are not connected to any sewerage. They're not connected to sewer lines. The excreta just goes into a pit. Some of the pits are built properly so it doesn't leach into the soil. Most toilets that I've come across are not very sensibly designed. So it just goes into groundwater in some form or the other. And I'll tell you later about the danger that poses. But once these pits fill up, people don't know what to do. And earlier they used to call Safai Karamcharis to clean this up. Now some enterprising individuals have created these trucks which have a pump which just vacuum sucks all the excreta from the pit. But then what do they do with it? They take it to a spot and they just throw it away. In some places they put it in rivers, in some other places they put it in tanks, village ponds. But in some of the places, the farmers actually invite them to come and put this in their field, because the farmers know that this is valuable fertilizer. But the farmers ask these guys, where is the grey water, black water from? If the truck operator tells them it's from a rich locality, they say no. You ask them for the reason and they say these rich people, they use too many chemicals in their toilets. There's too much of this overbearing desire to kill all kinds of bacteria and microbes because they watch too many advertisements. Says if the excreta is from a low income locality, they accept it. They say this is going to be the kind of fertilizer that breaks down very easily in our fields. These are called honeysucker trucks. And in most cities, if you look hard, you'll see these trucks moving around and they flash their number.
right? Likewise, there's organizations like the Center for, it's called CDD, Center for DWATS Dissemination. DWATS is essentially decentralized wastewater treatment systems. And they have a range of methods to clean up excreta locally without taking it to a river or a industrial scale sewage treatment plant. How do they do it? Well, they do it exactly like how your body functions. Because what comes out of our bodies is excreta full of bacteria, gut bacteria. I guess many of you would know this already, but for every single cell in your body, 10 microbes live on your body. In any fair kind of universe, if these microbes had a good lawyer, they'd send you notices for the kind of medicines you subject them to. You might have noticed that there are people who eat a lot and manage to remain very thin. And then there are others who eat very little but they're still fat. And that has to do with the microbes in their guts. Now science is increasingly realizing that pretty much everything has to do, even your temperament. If somebody is very calm or somebody is very irritable, that has to do with the nature of their gut bacteria. That bacteria is anaerobic. It functions without oxygen. So, if you can create conditions which are like your stomach, which means they're closed and there's no oxygen getting in, the excreta will break down. It'll break down ultimately into methane, the gas that we produce when we fart, which is due to a bacteria called methanosarcina, which is present both in our guts and in the depths of the oceans. That bacteria, by the way, caused the greatest major mass extinction event 252 million years ago on our planet, when it acquired a mutation from a bacteria, not a bacteria, old unicellular life forms called archaea, which enabled it to gobble up a whole lot of carbon, dead matter on the ocean floor and turn it into food. And they excreted shitloads of methane, which changed the climate and led to 95% of all species going extinct. It's called the Great Dying, if you look it up. Scientists call it the Permian-Triassic extinction event. So if we have all those bacteria in our stomach and they come out with our feces, if you create the same kind of atmosphere that's there in our stomach, you can treat the excreta. It need not go and pollute a river or a water body or groundwater. And here you have an example of one of these treatment systems. It's called a baffled anaerobic reactor. You can set this up for small localities or even one building. And they function much, it doesn't need electricity. It doesn't need any major technological innovation. All you have to do is, maybe you've noticed that your intestines are actually very long. They're several meters long, but they coil into your stomach. And the evolution of that has to do with bacteria. The bacteria want your food to move slowly through the intestines. And what this does, as you can see, it moves the water in the same way. It has to, the moment it enters the chamber, there's a wall coming from the top, it's forced down, it goes down, then it turns around and comes up. On the other side, there is another wall that's going up. It's exactly like our intestines. So if you have this, the water coming out at the other end is actually much cleaner than what went in. This is coupled with, say, like a reed bed or other ways to treat excreta. But so these kind of systems, they are being used. There are several places, especially in South India. For some reason, South India is much better on these things than North India. So, but you can ask, is there a large, because these are all small systems, they run without electricity. So you can ask, is there a large
wastewater treatment system in the world that works. The most spectacular that I came across is in the city of Kolkata. And to understand that, you need to understand the geography of Kolkata a little bit. Is there anybody here from Kolkata, from West Bengal? One, two hands. Thank you. First, a little bit of geology. I'm sure all of you know about the tectonic shift and how India broke away from Gondwana and then moved north. It's called the Cheetah Plate because it's the fastest plate in the history of tectonics. And it started breaking from Gondwana about 150 million years ago. About 90 million years ago, it got separated from Madagascar. And then about 50 million years ago, it collided with Asia, creating the Himalaya. So in plate tectonics, when two plates collide, there's only two ways to settle the pressure because there's a lot of pressure being put in opposite directions. One is that they have to rub sideways. The other is that one plate has to rise and the other has to go down. So what was earlier the ocean floor on the side of Asia is today Ladakh, the Tibetan plateau. 3.5 kilometers up in the sky. So just imagine where the Indian plate is going. It's going down. So the south of the Himalaya should actually have been a major moat that should have been filled from the west by the Arabian Sea and from the east by the Bay of Bengal. And India should have been an island. But we are not an island. We are not an island because the world's strongest monsoon comes every summer and hits the tallest wall in the world called the Himalaya. And it brings down sand from the Himalaya and it fills up that trough. And that's why you go travel to any part of this country, you'll see land that's rolling up, down, you'll see hills, you'll see plateaus, but only when you travel from, say, Lahore to Calcutta, will you see flat plains. You can look on either side of the road. You can look out from the train. It's like flat land. And that kind of flatness only comes from water. Because this area has been filled up by the Himalaya silt. And that is what has made this area. Now, many years ago, there was a river. The main channel of the Ganga did not actually go west into where Bangladesh is right now. The main channel of the Ganga came out through where Calcutta is. And this area had so much silt that it was very high. But then due to, these rivers keep changing their courses because they carry so much silt. I'm sure you're familiar with the story of the Farakka barrage and how Bihar has been complaining that they have these floods because the barrage has been collecting silt. So, once the Ganga changed its course, the land east of Kolkata stopped getting silt. So it became a lowland. And then the Bay of Bengal sent in saline water. So this became like a salt marsh. And it was called the Salt Lakes. Sometime around 60, 70 years ago, a big part of this area that's shaded, north of here, was turned into what is called the Salt Lake City. But some of the marshes remained. And once Kolkata started putting its sewage into that river, whatever little flow that river had died out. This was the 1890s or so. Now, the sewage system of Kolkata had begun to be built in 1803 because the Britishers were skeptical about drinking water from the same water body where they were putting their shit. So they decided to build a sewage system that would take
The sewage east of the city, as you know, all of Kolkata is east of the Hooghly. The river that you see over there is Hooghly. And Kolkata is east of the Hooghly. And then the salt marshes are east of Kolkata. So they started putting the sewage there till the river called Vidyadhari got killed. So a new sewage system had to be built, which was built somewhere in the 1930s or so. But then everyone forgot about it. This story gets left here and we pick it up in 1980, when the Finance Minister of West Bengal sends a directive asking the State Planning Board to find ways to profitably use sewage. Would you rather I say this, I mean I use Hindi here? I can very easily switch because it's easier to do this in Hindi. I'm getting the feeling that people are not really getting into it. So let's try a switch of languages here. Right? 1980 में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने राज्य के योजना आयोग से ये कहा कि हमें मैला पानी इस्तेमाल करने के लाभकारी तरीके ढूंढने हैं। ये काम एक सिरफिरे अफसर को दिया गया। ऐसे काम सरकार में आते रहते हैं और वो अफसरों के पास जाते हैं और वो फाइल में कहीं दब जाते हैं, कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन ये ऑर्डर एक ऐसे अफसर के पास गया जो बहुत खुददार थे। उनकी मृत्यु इसी साल हुई है। उनका नाम ध्रुवज्योति घोष था और घोष बाबू ने ये तय किया कि वो ये काम ईमानदारी से करेंगे। लेकिन खुददार आदमी ये सोचता है, उन्हें सबसे पहले ये कहा गया कि उन्हें मुंबई जाना है, जहां दादर में 1840 के आसपास हमारे देश का पहला मैला साफ करने का कारखाना बना था। तो उनकी बंबई की टिकट कट गई थी। लेकिन घोष बाबू के मन में एक सवाल उठा कि वो किसी और के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आपके यहाँ मैला पानी साफ कैसे होता है। अगर उन्होंने घोष बाबू से पूछ लिया कि कोलकाता क्या करता है तो वो क्या जवाब देंगे। तो घोष बाबू ने मालूम करना शुरू किया कि कोलकाता के मैले पानी का क्या होता है। उन्होंने पाया इस बारे में कोई एक भी कागज राज्य के प्लानिंग बोर्ड में नहीं था। इसके बाद वो कलकत्ता की महानगर पालिका में गए। महानगर पालिका में किसी अफसर को पता नहीं था कि कलकत्ता के मैले पानी का क्या होता है। इसके बाद वो एक एक करके सारे सरकारी विभाग खंगालते चले गए और किसी को नहीं पता था कि कोलकाता के मैले पानी का क्या होता है। कोई और होता तो शायद वहां से निकल लेता। घोष बाबू इस तरह के व्यक्ति नहीं थे। घोष बाबू एक नाली के किनारे गए और उन्होंने पैदल चलना शुरू कर दिया, मालूम करने के लिए कि ये नालियां कहाँ जाती हैं। चलते चलते वो कोलकाता के पूर्वी इलाके में आए, जहां एक बहुत बड़ी नहर उनको दिखी जो शहर का मैला पानी पूरब की ओर लेके जा रही थी। और आगे जाने पर बानताला नाम के इलाके में उन्हें एक बांध मिला, जहां पे आप शायद देख सकते हैं कि आपके दाहिनी ओर जो बांध का दरवाजा है उसमें पानी का स्तर ऊंचा है, जबकि बाईं ओर नीचा है। तो यहाँ पे पानी को उठाकर ढलान से उल्टा उत्तर की ओर ले जाया जा रहा था। और आगे गए तो उन्होंने पाया कि इस पानी को कई उथले तालाबों में खड़ा रखा जाता था। जो लोग आप में से बांग्ला जानते हैं वो जानते होंगे, ऐसे तालाबों को बांग्ला में भेरी कहते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? भेरी शब्द सुना है आपने? आपने सुना है जी, आपने भी सुना है। तो उस भेरी में वो इस मैले पानी को खड़ा रखते हैं, जिससे उसमें सूरज की रोशनी की वजह से काई फूट जाती है। यानी कलकत्ता शहर का टट्टी पेशाब काई में बदल जाता है। एक बार जब काई उसमें पैदा हो जाती है तो बहुत जतन से ये मछुआरे उसको दूसरी भेरी में लेके जाते हैं, जहां पर इसमें छोटे छोटे मछली के बच्चे छोड़ दिए जाते हैं। ये मछली काई खाती है। और इस मछली को कौन खाता है? कलकत्ता शहर। कलकत्ता में बिकने वाली आधी मछली
उसी के मलमूत्र से आती है। और कोलकाता के शहरों में, हमारे देश के शहरों की तुलना में, दूसरे किसी भी शहर की तुलना में कोलकाता में भोजन ज़्यादा सस्ता मिलता है। उसका कारण ये है कि कलकत्ता के कचरे को खाद बना के उसमें सब्जी उगाई जाती है, कलकत्ता के मेले से मछली उगाई जाती है। कलकत्ता में गरीब व्यक्ति भी इतना अच्छा भोजन कर सकता है जो हमारे कुछ महंगे शहरों के अमीर इलाके के लोग भी नहीं कर सकते। हो सकता है आपके सवाल में आपके मन में ये सवाल उठे कि ये साफ होता है क्या? अगर ये साफ नहीं होता तो कलकत्ता में कई रोग फैल जाते, महामारियां होती। लेकिन कलकत्ता हमारे किसी भी दूसरे शहर की तुलना में ज़्यादा घनी आबादी का इलाका है, और ये तरीका आज से लगभग 80 से 100 साल पुराना है। किसने बनाया? साधारण मछुआरों ने। ये मछुआरे कलकत्ता का मैला लेते हैं और उसमें सोना उगा के उसे वापस दे देते हैं। कोई और समय होता, कोई और वक्त होता तो इन्हें ऋषि कहा जाता। यही ऋषि कर्म होता है। शिव जी ने यह किया था कि समुद्र मंथन में जो जहर निकला था वो शिव जी ने पी लिया था और अमृत दूसरों के लिए छोड़ दिया था। कलकत्ता के मछुआरे शहर भर का मैला लेते हैं, बिना किसी खर्चे के उसमें भोजन पैदा करते हैं, वापस शहर को बेचते हैं। ना तो उन्हें खाद्य विभाग से कुछ मिलता है। कलकत्ता को मैला पानी साफ करने के लिए वो हजारों करोड़ रुपया खर्च नहीं करना पड़ता जो दूसरे शहरों को करना पड़ता है। यानी मछुआरे कलकत्ता का बहुत बड़ा फायदा करते हैं, सस्ता भोजन देते हैं। उनको जो आधुनिक किस्म के मंत्रालय बने हैं, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, कोई सब्सिडी नहीं मिलती। कोई और देश होता, कोई और शहर होता तो शायद इन लोगों को माथे पे रख के फिरता कि ये हमारे नए युग के ऋषि हैं जो जहर से सोना निकालना जानते हैं। लेकिन कलकत्ता इनके साथ क्या करता है? कलकत्ता इन्हें निकालना चाहता है। अगर अकेले घोष बाबू नहीं होते तो इस इलाके का आज वही हो गया होता जो सॉल्ट लेक सिटी का हुआ है। इसमें मैं एक चीज आपको बताना भूल गया। आपने पाया होगा आजकल हमारे सारे नए शहरों में बरसात के समय बाढ़ आती है। चेन्नई में ये बाढ़ आज से 3-4 साल पहले आई थी। मुंबई में हर साल आती है, लेकिन 2005 में एक बड़ी बाढ़ में 500 लोग मारे गए थे। दिल्ली का बहुत महंगा T3 एयरपोर्ट पानी में डूब चुका है। कलकत्ता में दिल्ली की तुलना में ज्यादा पानी गिरता है, चेन्नई की तुलना में ज्यादा पानी गिरता है, लेकिन कलकत्ता में बाढ़ नहीं आती, क्योंकि कलकत्ता में जो ज्यादा पानी गिरता है उसे ये भेड़ियां झेल लेती हैं। और अगर इन्हें पाट के बराबर कर दिया होता और इनकी जगह भवन बन गए होते तो आप मान के चलिए कलकत्ता में भी वही हाहाकार मचा होता जो बाकी शहरों में होता है। यानी केवल सस्ता भोजन नहीं, केवल मैले पानी का बिना खर्चे के उपचार नहीं, कलकत्ता शहर को फ्लड कंट्रोल तक ये मछुआरे देते हैं और उसके बदले में शहर इनको निकालना चाहता है। सारे राजनीतिक दलों की सरकारों ने इनको निकालने की कोशिश की है। अगर एक अकेले ध्रुव ज्योति घोष नहीं होते तो आज ये इलाका सपाट कर दिया होता, इसकी जगह मॉल बन गए होते और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बन गए होते और शहर में बाढ़ आ रही होती, शहर का मैला पानी कहीं और सड़ रहा होता। मेरे ख्याल से समय काफ़ी हो गया है। हम जरा सा एक यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक लेंगे, क्योंकि अब तक आपने जो स्वच्छता के तरीके देखे वो सामाजिक तरीके थे। अब हम थोड़े असामाजिक तरीकों पे आएंगे, क्योंकि हमारे देश में पिछले कई सालों से कई ऐसे अभियान चल रहे हैं जो लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि वो गंदे हैं, कि खुले में शौच करना कितना खराब है। कुछ लोगों को लगता है कि ये हाल की सरकारों ने किया है, ऐसा नहीं है। ये कार्यक्रम सन 1986 में शुरू हुए थे
और 1986 में ही नदियों को साफ करने का कार्यक्रम भी शुरू हुआ था। यानी नदियों को दूषित करने का कार्यक्रम और नदियों को साफ करने का कार्यक्रम एक ही साल शुरू हुए, 1986। 1986 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसका नाम अंग्रेजी में सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम था, हिंदी में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। कुछ सालों बाद सरकार की एक समिति बैठी, उन्होंने मालूम करने की कोशिश की कि कार्यक्रम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। उन्हें पता लगा कि यह काम नहीं कर रहा है, तो सरकार ने उसी समय निर्णय लिया कि कार्यक्रम का नाम बदल दिया जाए। नाम बदल के हो गया टोटल सैनिटेशन कैंपेन। फिर एक कमेटी बैठी, फिर उन्होंने मालूम करने की कोशिश की कि ये काम कर रहा है कि नहीं। उन्हें पता लगा काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर झट से नाम बदल दिया। नाम हो गया निर्मल भारत अभियान। फिर एक नए दल की सरकार आई केंद्र में, उन्होंने मालूम किया कि ये कार्यक्रम काम कर रहा है कि नहीं। उन्होंने पाया नहीं कर रहा है, उन्होंने झट से उसको बदल के नाम रख दिया स्वच्छ भारत आंदोलन। आप पाएंगे नाम की सफाई तो हुई है, नाम एकदम साफ हो गया, लगातार हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद इसमें सफाई भी नाम पर की है, क्योंकि ये इसका सबसे नया रूप है। हमारे प्रधानमंत्री इसमें बहुत रुचि लेते हैं। इसमें मैं चाहूँगा कि आप एक बार जरा ध्यान से इस कार्यक्रम के चिन्ह को देख लीजिए, जो गांधी जी का चश्मा है। क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि हम गांधी जी के चश्मे से अपनी दुनिया देखने की कोशिश करें। यानी आप सब मोबाइलधारी लोग हैं, आपके फ़ोन में GPS होगा, गूगल मैप्स होंगे। आप उसमें गांधी जी का चश्मा लगाइए और गूगल मैप्स में वजीराबाद दिल्ली टाइप कीजिए। जब आप करेंगे तब आपके सामने ये दृश्य आएगा। ये वो जगह है जहाँ पे ये वजीराबाद है, जहाँ पे यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश करती है। यहाँ एक बांध बना हुआ है जहाँ से पानी निकाल के दिल्ली को सप्लाई किया जाता है। ये काफ़ी पुराना बांध है, अंग्रेज़ों के समय का बांध है। और आपको अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जब नदी दिल्ली में घुसती है तो उसके पानी का रंग हरा नीला जैसा है, और कुछ मीटर के अंदर, कुछ 100 मीटर 200 मीटर के अंदर वो पानी काला हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि एक नजफगढ़ नाला है जो दिल्ली ही नहीं गुड़गांव तक का मैला पानी लाके यमुना में डालता है। यानी यमुना से दिल्ली सारा पानी निकाल लेता है, उसमें अपना मैला पानी डाल देता है। ये जिस समय का लिया गया है वो गर्मी का नहीं है। गर्मी में जितना पानी बांध के नीचे आपको दिख रहा है उतना भी नहीं होता। बांध के नीचे नदी थोड़ी देर तक सूखी रहती है और फिर काला पानी दिखता है, जिसे नजफगढ़ नाला कहा जाता है। एक समय ये साहिबी नदी थी जो अरावली के पश्चिम से बरसात का पानी घुमा के यमुना तक लाती थी। ऐसी यमुना की छोटी बड़ी दिल्ली में 13 से 17 नदियां हैं जो आज नालों में बदली गई हैं, जिनमें आज सीवर का पानी बहता है और दुर्गंध देता है। दिल्ली के बड़े चौराहों पे, ITO पे अगर आप खड़े हो जाएं तो आप ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध वहाँ पे आपकी ऐसी की तैसी कर देगी। और तो और अगर आप प्रधानमंत्री निवास के पास पहुँच जाएं तो वहाँ भी आपको यही गंध आएगी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, क्योंकि वहाँ कुशक नाम की एक पुरानी नदी थी जिसे अब बदल के नाला कर दिया गया। आप पाएंगे जो लोग ये कर रहे हैं उन्हें कोई शर्मिंदा नहीं करता। कोई ये नहीं कहता कि तुमने अपनी नदी से सारा पानी निकाल के उसमें अपना टट्टी पेशाब डाल दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो लोग ये कर रहे हैं वो साफ हैं एकदम, उनके शौचालय भी चकाचक साफ है। इसकी कीमत क्या है? आखिर ये जो काला कर रहा है हमारे पानी को, ये क्या है? ये हमारे पिछले दिन का भोजन है, स्वादिष्ट भोजन। उसको बनाने में, उसको खाने में, किसी रेस्तरां जाने में हम बहुत जतन लगाते हैं और अगले दिन वो मैला बन के निकलता है। तो अगर ये हमारा भोजन है तो जाहिर है ये मिट्टी से निकला है। मिट्टी से निकलने का हिसाब ये है कि हर साल
हमारे देश में मिट्टी से 1 करोड़ टन उर्वरक निकाल लिए जाते हैं। हर साल हमारी खेती की मिट्टी से 1 करोड़ टन उर्वरक कम हो रहे हैं। इनको पूरा करने के लिए सरकार हर साल फर्टिलाइजर की सब्सिडी देती है। आज से कोई 10 साल पहले ये सब्सिडी 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गई थी। आज ये 80,000 करोड़ के आसपास है। जिन 3 सब्सिडीज की वजह से हमारे बजट में हर साल सेंध लगती है, 3 बड़ी सब्सिडीज है, एक तो भोजन की, एक तेल की और तीसरी फर्टिलाइजर की। उनमें से एक फर्टिलाइजर है। और ये कहां जाता है? हमारी नदियों में। यानी हमने अपने स्वच्छता कार्यक्रम ऐसा बना लिया है जो हमारी मिट्टी को बंजर कर रहा है, हमारे जल स्रोतों को दूषित कर रहा है, और हमें यह गुमान है कि हम साफ सुथरे हैं। जिन नालियों से ये पहुंचता है उन्हें साफ करने के लिए हर साल कम से कम, जो हमें पता लगता है, 300 से 400 लोग मारे जाते हैं। कम से कम 200 लोग। कोई शर्मिंदा नहीं करता कि आप जिस सीवर की नाली से अपना टट्टी पेशाब बहा रहे हैं, उसे खोलने में किसी माँ बाप का बेटा, किसी महिला का पति, कुछ बच्चों का पिता अपनी जान दे चुका है। ईमानदारी से कहें तो यह हमारे समय की नई नर्बली व्यवस्था है, जहां हम अपनी नालियां साफ रखने के लिए हर साल 200 से 400 लोगों की बलि चढ़ाते हैं। हमारे साफ होने की कीमत या तो हमारी नदियां झेलती हैं या हमारे मजबूर लोग झेलते हैं, जिनके पास सफाई का काम करने के अलावा कोई दूसरा रोजगार का तरीका नहीं है। ये काम केवल मजबूर लोग करते हैं और ये काम करने के उन्हें 150 से 200 से 300 रुपए तक मिलते हैं। अगर मारे जाएं तो ठेकेदार घर वालों को कुछ 1000-2000 रुपए देके भगा देता है। और ये कहाँ होता है? हमारे संसद भवन से पत्थर फेंकने की दूरी पे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला संस्थान है, जहां पे आज से 3 साल पहले 3 लोग दम घुट के उसका सेप्टिक टैंक साफ करने में मारे गए। मैं ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में बैठा हूं जहां संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ बैठ के ये बात करते हैं कि लोगों को शर्मिंदा कैसे किया जाए कि वो खुले में शौच कर रहे हैं, और कोई उनसे नहीं पूछता कि वो जिस 5 सितारा होटल में चुराए हुए पानी से अपना टट्टी पेशाब बहा रहे हैं, वो किस नाली से होता हुआ किस नदी में जा रहा है। उन्हें शर्मिंदा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि सफाई केवल शर्मिंदा करने से काम चलेगा सफाई का। चलिए, हम लोग ये बलि भी चढ़ा सकते हैं, साफ रहना जरूरी है। हम मान लेते हैं कि हम हर साल 400 लोगों को मार सकते हैं। हम अपनी सभी नदियों को टट्टी पेशाब बहाने की नालियों में बदल सकते हैं, लेकिन क्या इससे हम साफ हो जाएंगे? आपके सामने एक चित्र है जिसमें एक हैंडपंप लगा है, जो ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि सरकार कोई काम नहीं करती है। सरकार आखिर शौचालय भी बनाती है, पीने के पानी का भी इंतजाम करती है, और इस चित्र में पता लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के अगल बगल में कर दिए गए हैं। सरकार ने एक हैंडपंप लगाया और उसके ठीक पीछे एक शौचालय बना दिया। धीरे धीरे शौचालय के गड्ढे से रिस के टट्टी पेशाब हैंडपंप के पानी में आ गया, जिसके बाद सरकार को हैंडपंप पे एक धब्बा लगाना पड़ा भूरे रंग का। नीले रंग पे आपको साफ दिख जाएगा, ये कहने के लिए कि इसका पानी न पिया जाए। आप में से कोई है जो बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं? हाथ खड़ा करें। एक हाथ दिखा, 2, 3, 4, बहुत कम लोग हैं। अच्छा, वो इलाका गंगा का, मैंने आपसे पहले कहा कि गंगा का जो मैदानी इलाका है वो हिमालय की मिट्टी से बनाया है। हिमालय की जिन चट्टानों से वो मिट्टी आई है उसमें आर्सेनिक पायराइट की चट्टानें भी हैं। तो बहुत सा इलाका ऐसा है गंगा का जहाँ पे नीचे मिट्टी में आर्सेनिक है।
बंगाल में ये ज़्यादा है, उससे थोड़ा कम बिहार में है, और उत्तर प्रदेश में उससे थोड़ा कम है। मुझे नहीं पता आप में से कोई ऐसा है जिसने ऐसे गाँव की यात्रा की हो जहाँ के पानी में आर्सेनिक है। एक हाथ दिखा, बंगाल का ये है। दूसरा नहीं, एक और दिखा, कैंसर दिखता है वहाँ। वो बाल्टी जो है 1 हफ्ते में काला हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन बाल्टी का पानी काला होना एक चीज़ है। इन गांवों में आपको लोग लंगड़ाते हुए दिखेंगे, ऐसे लोग दिखेंगे जिनके दांत टूटे हुए हैं। जवानी में आपको ऐसे दिखेंगे जैसे वो कोई 80 साल के बूढ़े हैं, और ये सब आर्सेनिक से होता है। कोई ये नहीं पूछता कि यही गांव, गंगा का ये इलाका कम से कम 2500 साल से तो आबाद है। अगर यहाँ नीचे आर्सेनिक है तो लोग पहले क्यों नहीं मर गए? बहुत सीधा सा जवाब है इसका। पहले लोग पानी कुएं और तालाब से निकालते थे। कुएं और तालाब में ये गुंजाइश रहती है कि हवा से ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करके आर्सेनिक को नीचे बिठा दे। जैसे फिटकरी लगने के बाद पानी में कचरा नीचे बैठ जाता है, वैसे ही। लेकिन अगर आप हैंडपंप से पानी निकालेंगे तो वो बिना ऑक्सीजन का पानी होगा। मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने एक ही इलाके में इतनी दूरी पे, वहाँ कुआं है, यहाँ हैंडपंप है, दोनों की एक ही गहराई पे पानी है, दोनों का पानी निकाल के उसका प्रयोगशाला में विश्लेषण किया। दोनों के पानी एक सा ही है, उसका रासायनिक स्वभाव एक सा है। अगर उसमें बैक्टीरियल कॉलीफॉर्म है तो इसमें भी है, लेकिन कुएं के पानी में आर्सेनिक नहीं है। बुनियादी सबक है जो हमारी सरकारें भूल गई हैं। आज बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे चांसलर साहब के बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके नाम पे पूरे राज्य में होर्डिंग लगी हुई है जहां पे वो वादा कर रहे हैं कि हर घर में हैंडपंप लगा देंगे। और अगर आप उन्हें कहें कि ये हैंडपंप आर्सेनिक देगा तो वो मानेंगे नहीं, क्योंकि सरकारी विज्ञान आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आर्सेनिक आने का तरीका ये है। हमने गंगा नदी को साफ करने का जो अभियान चल रहा है सरकार का, उसके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने मुझे ये कहा था, जाहिर है उनका नाम नहीं ले सकता, उन्होंने कहा था कि हमारे सफाई करने के अभियान हमारे पूरे देश को जहर में डुबोने के अभियान है। लेकिन आप स्वच्छता कार्यक्रम के बारे में कुछ भी खुले मन से नहीं कह सकते, क्योंकि ये माना जाता है कि ये कोई बहुत ऊंचा राष्ट्रीय कर्म है। हम लोग अपने लोगों से जाके पूछते भी नहीं हैं, लेकिन ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है। आपके सामने सन 2014 का एक बहुत बड़ा अध्ययन है जिसमें कई वैज्ञानिकों ने ये जानने की कोशिश की कि क्या शौचालय बनाने से स्वच्छता आ जाएगी और बीमारियां होनी कम हो जाएंगी। उनका निष्कर्ष ये निकलता है, our results show that this outcome cannot be assumed। यानी ये कोई वैज्ञानिक अध्ययन ये मानने को तैयार नहीं है कि शौचालय बनाने से स्वच्छता आ जाएगी और वो बीमारियां कम हो जाएंगी जो हमारे मल से फैलती हैं। ऐसा एक और अध्ययन लगभग इसी समय प्रकाशित हुआ जिसमें वैज्ञानिकों की एक बड़ी टोली ने 5 राज्यों में लोगों से पूछा कि क्या तुम्हें खुले में शौच जाना पसंद है या शौचालय में, और उन्होंने पाया कि केवल शौचालय बना देना कहीं से भी आपको बीमारियों से दूर नहीं कर सकता। ये उनका निष्कर्ष है जिसमें आता है, our data predict that if the government were to build a latrine for every rural household that lacks one without changing sanitation preferences, most people in our sample in these states would nevertheless defecate in the open। ये भांडा कई बार फूट चुका है कि सरकार जिन गांवों को, जिन जिलों को ODF कर चुकी है, ODF एक तरह का धार्मिक अनुष्ठान बन चुका है, ओपन डेफिकेशन फ्री। ऐसे कई जिले, ऐसे कई गांव हैं जिनको घोषित कर दिया गया है कि ये ओपन डेफिकेशन फ्री हैं, लेकिन आप वहां पैदल चल के तो देखिए जरा। मैंने चला है, मेरे जूतों ने उसको महसूस किया है, मेरी नाक ने उसको सूंघा है।
हड़बड़ी इस बात की है, देखिए इससे पता ये लगता है कि हमारे स्वच्छता कार्यक्रम अपने लोगों के प्रति प्यार से नहीं निकलते। हमें अपने उन लोगों से शर्म आती है जो खुले में शौच जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा देश भी चकाचक वैसा साफ हो जाए जैसा उस आदर्श दुनिया में होता है जिसे हम यूरोप या अमेरिका कहते हैं। हमारे देश का एक संभ्रांत हिस्सा विदेश घूमकर आता है, वहाँ के चकाचक चीज़ें देखता है और वो चाहता है कि यहाँ पे भी सब कुछ वैसा ही चकाचक हो। और हमें अपने उन लोगों से शर्म आती है जो अपना टट्टी पेशाब गंगा में नहीं डाल रहे। उन लोगों से शर्म आती है जो दूसरों का पानी लूट के अपना टट्टी पेशाब हर रोज सुबह उसमें बहाते नहीं हैं, क्योंकि हमारा हर शहर लुटेरा शहर है। दिल्ली का पानी 350 किलोमीटर दूर से आता है। जब भाखड़ा परियोजना बनी थी तब रावी और ब्यास नदी का पानी दिल्ली को दिया जाता था। टिहरी बांध बनाने का एक कारण यह बताया गया कि दिल्ली को पानी की जरूरत है। दिल्ली का पानी गढ़गंगा एक 125 किलोमीटर दूर दिल्ली से, वहां से दिल्ली को गंगा का पानी चाहिए। हिमाचल में रेणुका नदी पे बांध बनाने की बात चल रही है क्योंकि दिल्ली को पानी चाहिए। हमारे सारे शहर अपने आसपास का पानी लूटते हैं और लूटे हुए पानी को अपने फ्लश में बहाते हैं और अपने जल स्रोतों को दूषित करते हैं, लेकिन कोई उन्हें शर्मिंदा करने वाला विज्ञापन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि आप लूट के पानी में अपना टट्टी पेशाब बहा रहे हैं। इसके अलावा हमने एक बहुत व्यवस्थित तरीका बना लिया है अपने लोगों का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने का। गांव-गांव में टोलियां घूमती हैं सीटियां लेकर, लाठियां लेकर। राजस्थान में ऐसा भी हुआ है कि अधिकारी लोग स्वच्छता के लिए शौच करने बैठी महिलाओं का फोटो लेने चले गए और जब उन्हें रोका गया तो जिसने रोका उसकी पीट पीट के हत्या कर दी गई। ऐसे किस्से अनगिनत हैं कि कोई महिला जब अपने घर वापस लौटी तो उसका मल उठा के उसके चौके में फेंक दिया गया था, फैला के। ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों के घर पे ताले लगा दिए गए थे क्योंकि वो सुबह शौच करने गए थे। सुबह बच्चों की टोलियां सीटियां बजाते हुए घूमती हैं लोगों को शर्मिंदा करने के लिए। ये हम अपने लोगों के साथ कर रहे हैं और गांधी जी के चश्मे के नाम पे कर रहे हैं। गांधी जी ऐसा व्यवहार अंग्रेजों के साथ भी नहीं करते जैसा आज स्वच्छता के नाम पे हमने अपने लोगों के साथ करना शुरू कर दिया है। और इसके पीछे जो मूल भाव है वो घृणा का है। घृणा पे कई वैज्ञानिकों ने लिखा है। आप पीछे जाएंगे तो नाट्यशास्त्र में आपको जो नवरस मिलेंगे उनमें एक विभत्स रस है जो बताता है कि घृणा असली में हमारे अंदर है। चार्ल्स डार्विन ने घृणा पे लिखा है, सिगमंड फ्रॉइड ने घृणा पे लिखा है। घृणा पे काम करने वाले लोग आज तक ये पक्का तय नहीं कर पाए कि हमारे मल से जो घृणा है वो सहज होती है या वो हमारे मन में डाली जाती है बचपन से। फ्रॉइड का कहना था कि वो डाली जाती है, डार्विन कहते थे कि वो आजन्म होती है। लेकिन ये सभी जानते हैं कि घृणा बहुत ताकतवर भाव होता है और हमें जो पसंद नहीं आता उसे हम घृणा का पात्र बना लेते हैं। अगर मुझे अपने गले में तमगा डाल के काम पे जाने वाले लोग अच्छे नहीं लगते तो मैं आप सबको घृणित मान लूंगा। अगर आपको कोई चौकोर शर्ट पहनने वाला अच्छा नहीं लगता तो आप कहेंगे ये चौकोर शर्ट पहनने वाले तो होते ही ऐसे। लेकिन घृणा का आप क्या उपयोग करेंगे ये बहुत महत्व रखता है। और आज हमने स्वच्छता के नाम पे जिसकी लाठी उसकी भैंस का एक घृणा तंत्र बना दिया है पूरा। आप पाएंगे जो पुराने मैंने आपको सामाजिक उदाहरण दिखाए उसमें लोग घृणा का इस्तेमाल नहीं करते। पद्मा वांग्याल ने जब मुझे छपाक छपाक कहा था तो वो तो मेरी घृणा को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो मुझे कहने की कोशिश कर रहा था कि इससे घृणा क्या, ये तो अपने शरीर से निकला है और उसके पहले मिट्टी से निकला है और जो मिट्टी से निकला है उसे वापस मिट्टी में ही जाना चाहिए। उसे अगर आप पानी में डालेंगे तो आपकी खेती की ज़मीन बर्बाद होगी, बंजर होगी।
आपके जल स्रोत दूषित होंगे। दिल्ली में 22 किलोमीटर यमुना बहती है। 22 किलोमीटर में 36 से ज़्यादा मैला पानी साफ करने के कारखाने हैं। 36 से ज़्यादा। कुल मिला के कम से कम 2,500 करोड़ रुपया यमुना को साफ करने पे खर्च किया गया है। हमारे देश में कुल मैला पानी साफ करने की जो क्षमता है उसका 1/4 से ज़्यादा सिर्फ दिल्ली के पास है। और उसके बाद यमुना से ज़्यादा दूषित नदी आपको नहीं मिलेगी। ऊपर से गुजरने में दुर्गंध आती है। और इसको साफ करने के नाम पे कीमत किसको चुकानी पड़ी? सन 2004 के आसपास किसी ने दिल्ली के हाई कोर्ट में जाके ये आवेदन लगाया कि कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली को साफ करना है और जो झुग्गी बस्तियां यमुना किनारे बनी हैं उनकी वजह से यमुना प्रदूषित होती है। कोर्ट ने फटाफट ऑर्डर दे दिया कि उनको निकाल के अलग करो। देखते देखते 20,000 परिवार, 1 लाख से ज़्यादा लोग यमुना पुश्ते से निकाले गए और उसके बाद उन्हें दिल्ली से बहुत दूर बुराड़ी में भेज दिया गया। किसी ने ये मालूम नहीं किया कि अगले साल यमुना में प्रदूषण घटा कि नहीं, क्योंकि अगले साल यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ चुका था। और दिल्ली में जो लोग यमुना किनारे पुश्ते पे झोपड़ी बना के रहते थे उन्हें नगर पालिका पानी नहीं देती थी, इसलिए उनका मैला पानी यमुना में नहीं जाता था। लेकिन जिस हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया उसका मैला पानी तब भी यमुना में जाता था, आज भी जाता है। क्योंकि हम सफाई के नाम पे किसी और को शर्मिंदा करना ज़्यादा आसान मानते हैं बजाय अपने आप को साफ करने के। इस संबंध में जो पुस्तक मैंने तैयार की है, जल थल मल शीर्षक की, वो अब राजकमल प्रकाशन से आ गई है और आप उसे चाहें तो अमेज़ॉन पे ख़रीद सकते हैं। लेकिन अपनी बात मैं इसी प्रार्थना के साथ पूरी करूंगा अभी कि हम सफाई के नाम पे अपने लोगों को, अपनी मिट्टी को, अपने जल स्रोतों को पराई आंख से देखना बंद करें। और खासकर अगर गांधी जी का चश्मा लगा है तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गांधी जी का आग्रह हमेशा परायों को अपना बना के देखने का होता था। आज हमने सफाई के नाम पे अपने लोगों को पराया बनाना शुरू कर दिया है। आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग शिक्षक हैं, बहुत से युवा लोग आपकी ओर बहुत उम्मीद से देखते हैं कि आप उन्हें ठीक बात समझा सकते हैं। इस प्रार्थना के साथ कि हमारी स्वच्छता की समझ को आप थोड़ा गहरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने इतने धीरज से मेरी बात सुनी, उसका आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। नमस्कार। Whenever some solution comes, we react to it. Question is, we are all intellectuals, we are a university. So, what we discuss here and would like to discuss is more about solutions rather than just the criticism of what is being done. So, in again and repeat, what should be the takeaway? You have given the present scenario. What should be the urban model which you have in mind, which can serve as an alternative? DWATS is something that's catching on across several towns actually. But it only happens when people want to fix their own problem. The problem with sanitation planning is the model mindset. There is no model. There is no model that's going to work anywhere. I've reported on the sewage treatment systems of the United States. I found that one of the most advanced sewage treatment plant is the Blue Plains treatment system in southeast Washington DC, which is among the craziest places in the world when you just look at the agroecological zones. There are places which are flood prone for half the year. There are places that have no water. There are places which are rocky. There are places where the groundwater table is 3 foot deep.
So you will not have a single model, but that's the reason the first half of the presentation was trying to show you ordinary people who've done this. And in my estimation, it's the ordinary people who have the best chance of finding solutions. Because like I say this in Hindi, ये सुविधा की दुविधा है. जिन लोगों के पास सुविधा है, उनके लिए कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि उन्हें लूट का पानी मिला हुआ है. अगर उन्हें अपने पानी की असली कीमत देनी पड़े, तो उस पानी को अपने टट्टी पेशाब के साथ फेंकना बंद कर दें. We never pay for the true cost of our sewage systems, of our water systems. Till that happens, there is no point in mentioning any model. Because if people are not paying for what they're using, then any model will fail. But people who've done these things, people who are running DWATS, DWATS treatment plants, there are hospitals in southern India which do not let any wastewater out of their compounds. There are localities which treat their own wastewater. They do that primarily because they're not getting cheap water. In my understanding, people who deal well with sanitation are people who have a water crisis. If you have free water, there is no way out. Is this problem separate than urbanization? No, it isn't. You're right. It is tied up with urbanization. And urbanization will have to find completely new ideas. And the ideas will not come from toilets. Oh, it's a part of urbanization. It's sanitation. You're very right. Because, if you were to ask me, if I had to start a pilot project somewhere, the first thing I'd do is, I'd ready a locality in a city which was willing to use eco-sand toilets. Because typically the cities loot things from farms, from villages. They take away their water, they get their food grain from there, they get their vegetables from there, they send nothing back. They take cheap labor from there, people who drive for us and clean our houses, they're all first generation migrants. This is one way, if we organize it well, that the shit and piss of cities can go back and add fertility to the soils in our villages. But that requires organization. People have tried these things out. The problem with, the greatest problem is the project-based approach. People who manage to find some money, then they create a project. By the time it gets going, the money dries up. So it just falls through. Imagine, compare this to how Gandhiji managed to find a charkha. Gandhiji was a Diwan's son. He had never seen a charkha. In 1915, when he was trying to figure out weaving, he'd set up 2 handlooms in the Kochrab ashram. He figured out that the cloth was all, the thread was all mill made. So he said, I want desi thread. So where will I find it? They said, there is no way to make it now. He said, what did they make it on earlier? He said, charkha. He said, where is the charkha? He says, this is not to be seen. You know how long it took Gandhiji to find the first charkha? Anybody? It took 2 years of writing letters consistently, of writing articles. And it was an eccentric woman called Gangaben Majumdar, who'd become a widow at a very young age, who was this fearless woman who went around the countryside on horseback. And he kept corresponding with her, and because of Gandhiji, she went around looking. And in 1917, she wrote back to him to say that I found a charkha. Then what was Gandhiji to do? If he were a government official, he would have sent one of the government officials to go and assess it. The government official would have gone and said, साहब वो नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? वो तो साहब बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब तो हमें कुछ और करना पड़ेगा. Who did Gandhiji send? He said Maganlal Gandhi. Maganlal Gandhi was his own nephew. Maganlal Gandhi is the guy who invented the word Satyagrah in South Africa, Sadagrah. And he was Gandhiji's troubleshooter. When Gandhiji saw an impossible situation, he used to unleash his dogs of war by the name of Maganlal Gandhi. So those are the ways to find solutions. We need people who are committed. We need people like Dhrubajyoti Ghosh. Any other government, these circulars come every day in government offices.
Who takes it seriously? Dhrubajyoti Ghosh sees this circular, and when he can't find anything, he goes for a walk, because he will establish things for himself. So people who find solutions are people who are looking for solutions for themselves, who are not looking to establish a model for others. In my experience, what I've seen, people who do well, and there are different technologies. No one technology will work everywhere. Although EcoSan toilet will work pretty much anywhere. Right? It will work in a dry area, it will work in a flood-prone area. I've seen, I forgot to put those pictures in this. I have images from Champaran, from a flood-prone area, where government-built pit toilets are not used, and EcoSan toilets built above ground have been built by ordinary villagers. They look more beautiful than temples. Because when people understand something and they do it for themselves, they do it really well. So in my experience, it's, ordinary people have a better chance of finding solutions. People who have a lot of facilities, not much hope for them. They have to first learn to price water adequately. As long as water is cheap, we will not have good sanitation. Does that answer your question, sir? Thank you.